Uh, yo guys, yo, check, mic check. Uh, yo guys, yo, check, mic check. लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है इन नेक्स्ट 16 मिनट्स। आप लोगों को देखने में साथ आप देख सकते हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ। गेम यार 15 मिनट बहुत होते हैं, गेम भी खेलनी चाहिए ना। गेम साउंड गेंशिन तो फिर टू स्क्रीन फुल क्या भाई आज ना पता नहीं बड़ा अज्जो भाई वेलकम वेलकम भाई। भाई पता है क्या प्रॉब्लम हुई आज, 10 इश्यू हो गए भाई। हेलो स्पीड भाई, वेलकम टू स्ट्रीम भाई। बस कितने 14 मिनट में शुरू होने वाली है ना मेन गेंशिन की लाइव स्ट्रीम में। अपन उसके लिए कर रहे हैं भाई आज ओबीएस में। भाई क्या क्या सीन हो गया था भाई, पता है हो ही नहीं। एक तो रुको यार, ये स्क्रीन हिलती रहेगी ना, मैं सेटअप नहीं कर पाऊँगा। पूरा लेआउट बिगड़ गया था, सब कुछ खराब हो गया था पता है। ये देखो व्यूवर ये बीच में नाच रहा है भाई, इसको मैं नॉर्मली भाई ये देखो इसको अभी इधर ही रखते। पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था लाइव स्ट्रीम आज हो ही नहीं पाएगी। मेरा विंडो कहाँ है, विंडो इसको ऊपर लाते हैं तो मैं दिखेगा फिर। कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया नहीं। कितने मिनट बचे हैं इसके लिए? इसका 13 मिनट है, तब तक गेंशिन में कुछ कर लेते हैं। तुम लोगों की चैट दिख रही है भाई? लो तुम्हारी चैट ही नहीं दिख रही है। अब मुझे लग रहा है चैट का भी इश्यू हो चुका है भाई। अरे यार फुल स्क्रीन हटाओ, ये हटाओ, इसका लिंक कहाँ है मेरी चैट का? भाई एक चीज़ बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। लो कम से कम एक भाई इसको अब उस पे किसने डाला है? कोरोना प्लीज, यस डन भाई। चार्ल्स भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? शशांक भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। बस शुरू होने वाला है 12 मिनट में भाई। आज भाई 6 के बाद आता हूँ, मर्जी तुम्हारी। 5:30 शुरू हो जाएगा लाइव स्ट्रीम यार। भाई कोई चैट कर ही नहीं रहा है। चैट कर रहे हैं भाई, चैट दिख नहीं रही थी उसमें। आज फैसमो नहीं खेलोगे? खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, क्या करना, खेल सकते हैं। काम इसलिए ओके कोई नहीं, आओ अपने टाइम से आओ।
अपने पे तो अभी है टाइम, तो 11 मिनट है। 11 मिनट में कमीशन तो अपन कर ही सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रीम से मैं अजीब लगती है यार मेरे को। तुम लोगों को शॉर्ट स्ट्रीम ज़्यादा बेटर लगती है या ये जो नॉर्मल स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ आज वो बेटर लगती है? क्योंकि दोनों का लेआउट ना सेव नहीं होता है। वो मेरे को एक बार दिन ऐसा 1 घंटा निकाल के दोनों सेव करनी पड़ेगी सही से, वरना तो ऐसे ही रहेगा। मेरे को सेटअप करने बार बार सेटअप करना झंझट है यार। नॉर्मल ऑब्वियसली वही नॉर्मल, फिर बेटर ही है यार। सच बताओ तो नॉर्मल बेटर है। फिर वो शॉर्ट वाली चीज़ें ना थोड़ा सा व्यूज़ लेने के लिए लोग करते हैं हरकतें। मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, बट अंत में मेरे को भी तो व्यूज़ चाहिए। बट व्यूज़ तो मेरे को ऐसे भी आ रहे हैं ना। तुम लोग तो भाई मेरे को नॉर्मल स्ट्रीम से ही मिले ना, तो फिर इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रीम में भी मेरे को भरोसा रखना चाहिए। टीवी पे शॉर्ट स्ट्रीम नहीं वियर्ड लगती है, देखने का मन भी नहीं करता। हाँ अरे फिर हाँ ठीक कह रहे हो यार। प्लस गेमिंग टाइप की गेम्स शॉर्ट स्ट्रीम पे अजीब लगती है ना। मे भी मेरे को कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रीम साथ में कर दूँ। भाई टीवी पे देखते हो तुम? क्रेजी वैसे। टीवी पे यूट्यूब चलाने का मज़ा अलग है क्या? ऐसे बिल्कुल कुछ क्रेजी लगता है कि नॉर्मली लगता है? मुझे डिस्कॉर्ड का लिंक दे दो अपना। एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड लिखो, मिल जाएगा। या तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसका मिशन के बाद। अरे भाई इलेक्ट्रो नहीं है। चैट कैसे कर रहा है टीवी पर भाई? उसके हैक्स भाई पता नहीं, टीवी पे उसके बटन लिखे हैं। मैं भी अरे वो मेरे ख्याल से चैट तो किसी और चीज़ से कर रहा होगा, टीवी पे देख रहा है वो। चैट मॉब से कर रहा हूँ। और मोबाइल 9 मिनट बचे। डिस्कॉर्ड क्लिकेबल नहीं है ये नाइट बोट वाला। हाँ क्लिकेबल तो नहीं है। क्लिकेबल चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में है क्लिकेबल पूरा। भाई नई कमीशन यार, ये तो पहली बार देखी। इसके 5 भी मिलेंगे खुल के। गुड बॉय कर रहा है भाई ये तो। भाई तुमने नया फैज़ोफोबिया का वो इवेंट खेला क्या? वो ब्लड भाई उसका चैलेंज मोड मैं ट्राई कर रहा था कल ऑफ स्ट्रीम में। भाई बड़ा डिफिकल्ट है रे। पता नहीं सैनिटी ड्रेन इतनी ज़्यादा है, भूत 2 सेकंड में आ जाता है। एनएच के टाइप बहुत। अगर मैं चैट में लिंक दूंगा ना तो वो भी क्लिकेबल नहीं होगा डिस्कॉर्ड का। हो गया क्या लाइव स्ट्रीम ऑप्शन? अभी होगा यार, होगा अभी कहाँ। कितने मिनट है अभी? 8 मिनट बचे हैं। इजी कमीशन है। मैं तो कमीशन में ना कैथरीन के बगल में ऐसे प्रीमो रखने चाहिए और हम जाके बस वो उठा ले रोज, है ना? कितना बढ़िया होगा। फालतू की मेहनत, इससे बात करो तो उससे बात करो, इसका खाना डिलीवर करो तो भाई इसको सिखाओ, ये बकवास चीज़ें भाई। आज आ रहा नारा क्वेस्ट कंप्लीट हुआ रे, क्रेजी है। बढ़िया है। आ रहा नारा तो गंदे क्वेस्टों में से एक है, बहुत लंबे क्वेस्ट होते हैं। मेरा भी मेरे ख्याल से पता है आरा नारा का ना एक चीज़ रह रहा है तो इसमें 5th 15 वाला। हाँ देखो 13 2 रह रहे हैं यार, मैंने कल का मिस कर दिया। मतलब टोटल 15 वो होती हैं फ़ोटोज़, और 10 तक तुम पे होंगी, सब पे ही होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी की 5 तो मैं रोज़ जाके डेली क्लेम करनी पड़ती है। मेरे को पता नहीं था तो मैंने लेट शुरू किया।
विदाउट हील क्या अजीब सी टीम लेके घूम रहा हूँ। Right now, right here. Come on out. Hey. भाई तुम में से कौन कौन चास्का को पुल करने का सोच रहा है कि करोगे क्या ऐसे? मे बी अगर अच्छी निकल गई, Emerge right now. गेम प्ले अच्छा लग गया या हाथ फिसल गया, ऐसा चांसेस One है with क्या? nature. विकास भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। I'm भाई always कोई watching. वर्ल्ड क्वेस्ट के डेली क्वेस्ट अनलॉक क्वेस्ट करने से अनलॉक होती है। हाँ हाँ, मॉन्स्टैट में कुछ कुछ हैं, उसमें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं जो वो कमीशन करने के बाद ही चीज़ें अनलॉक होती हैं। बहुत सारे क्वेस्ट वर्ल्ड क्वेस्ट करने के बाद चीज़ें अनलॉक होती हैं गेम में। और वो डिपेंड, तो मैं रेपुटेशन को चेक करके पता करना पड़ता है ना कि तुम्हारा क्या क्या मिसिंग है और क्या क्या। अगर कुछ मिसिंग है तो हो सकता है उससे और चीज़ें खुले, या तो फैंडम पेजेस पे ना क्वेस्ट का नाम लिख दिया करो, उससे तुम्हें वो अगर लिंकिंग क्वेस्ट्स होती हैं, लिंकिंग मतलब उससे और चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं तो पता चल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि लेकिन पेटी Add Astra. भाई विकास भाई एक चीज़ बताओ, एक क्रेजी चीज़ बताऊँ पूरी चैट वालों का, पता है क्या? कि वो जब हमने पिछला गिव अवे किया था ना, उसमें रेमरुक और Thank you for विकास दोनों एक ही बंदा था यार, अब वो फिर भी हार गया था यार। आई एम सेवेंथ, क्रेजी भाई। प्रोटेक्टर भाई, पता है मेरे को कुछ दिन पहले पता चल गया था, बट मैं बोल रहा था कि कभी बताऊंगा ना मैं। ये जो विकास है, इसने रिमरू और विकास दोनों सेम यूआईडी से रजिस्टर किया था ना, बट बेचारे की किस्मत नहीं थी। 5 मिनट बच रहे हैं, मैं भी शुरू हो गया, मैं चेक करता रहता हूँ, कभी 1-2 मिनट पहले भी शुरू हो जाता है यार। लाइव हो गया है शुरू, शायद से लाइव शुरू हुआ है बट लाइव नहीं हुआ है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं ओबीएस पे दिखाऊँ 1 मिनट, ये देखो, ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या? अरे एक तो ये सब कुछ सबसे ऊपर ही क्यों चला गया? तुम लोगों को कुछ दिखेगा, मैं देखूंगा। गेम के ऊपर, जस्ट गेम के ऊपर, और गेम की ऑडियो म्यूट करनी है, मेरे को याद कर दिला देना। आई गेस इतना बहुत है ना? बट अभी कुछ दिख नहीं रहा है, इसको हटा दो जेंशन को। भाई सेरा आइलैंड में जाके शिमा बोल के जगह ही उधर जाओ। श्राइन श्राइन, अरे कोई ए से कुछ नाम है, पता है मेरे को, बिल्ली वाली बात कर रहे हो तुम? ये ना AR-40 को नईडा पुल करनी चाहिए या नूवलेट? ओ मेरे ख्याल से नहीडा काम आ ही जाएगी ना। नोवलेट सिर्फ अकेला नोवलेट पूरा इतना नहीडा से बेटर नहीं हो सकता। नहीडा बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से नहीडा बेटर रहेगी। आई एम डिफरेंट विकास। ओह ओके, क्या करना है यहाँ पे अबीर भाई? 3 मिनट तो को, हाँ कहाँ पे? निको का क्वेस्ट करो डेली वाला, कर रखा है वो मैंने, उसका डेली का सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब ये मेरे को क्वेस्ट नहीं देती, 20-20 प्रीमो मिलते हैं इसके डेली, रोज़ आके 20 प्रीमो लेने पड़ते हैं इससे। कभी इधर पानी से घर साफ करो, कभी लकड़ी दो, कभी खाना खिलाओ बिल्लियों को, सारे कर दिए मैंने। अब मिलते हैं इसके क्वेस्ट मेरे को। 2 मिनट बचेगा इस, सिर्फ 2 मिनट। नीडा किसको देख रही है? ये इसको, ये क्या है रे? अभी भी शुरू हो जाएगा, तो मैं उस पर स्विच कर लेता हूँ। कर देता हूँ। वे रीरन्स किसके हो रहे हैं, क्या लग रहा है तुम्हें? किसी ने कुछ बताया था, क्या बताया था भूल गया। रीरन अभी फिर पता चल जाएगा, मजा आएगा देखते हैं। माई IGN इज वीक, देखते हैं भाई। ये स्ट्रीम से अच्छी
स्ट्रीम से अच्छी लगती है मेरे को। क्या? ये स्ट्रीम ही अच्छी लगती है मेरे को। ये स्ट्रीम, मेरी स्ट्रीम, गेंशिन की स्ट्रीम, 300 प्रीमो वाली स्ट्रीम। जस्ट 1 मिनट बचा है, आई गेस जल्दी शुरू हो जाएगा। गेम म्यूट कर दो ना, मेरे को चपड़ चपड़ आएगी बस। शॉर्ट बेकार लगते हैं। हाँ फिर ऐसा करते हैं, शॉर्ट स्ट्रीम करेंगे नहीं ना। शॉर्ट का फायदा क्या हुआ हमको? मेरे ख्याल से शॉर्ट का कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 दिन की, और 2 दिन में कुछ ऐसा डिफरेंस तो नहीं मिला मेरे को। तो हम नॉर्मल ही करा करेंगे। नॉर्मल मस्त है। नॉर्मल में इसे नॉर्मल स्ट्रीम से ही तो तुम लोग भी मिले, तो ऐसे ही मस्त है। बट नए लोग नहीं मिलेंगे तो हम नेक्स्ट गिव अवे कैसे करेंगे? नोवी और जोंगली के रीरन है शायद। हाँ अरे सेकेंड हाफ में, बट वो दोनों सेकेंड हाफ होंगे शायद से। नोवलेट और जोंगली दोनों सेकेंड हाफ लग रहे हैं। और औरन भाई बेस्ट चीज़ क्या होगी ना, नेक्स्ट पैच में हम लोग उड़ पाएंगे भाई। वो जो नया पेट आ रहा है चिड़िया वाला, वो मस्त है रे, एकदम क्रेजी उड़ेगा भाई वो। चालू हो गया, चालू हो गया। लॉल नहीं नहीं भाई, सही में चालू हो गया था। रिफ्रेश करना था मेरे को, पर ये अभी भी लोडिंग। ऐसे ही तो लाइव स्ट्रीमर बनते हैं। रुको फिर से रिफ्रेश दो। एकदम से स्टार्ट हुई। नहीं नहीं नहीं, ये मैं देख ही नहीं सकता। कोई नहीं, इस पे नहीं शुरू हुए थे। इस पे देखेंगे हम। ट्विच थोड़ी अर्ली शुरू हो गई है, हमने मिस भी कर दिया। उससे बेटर है यहाँ देख लेते हैं। We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natlan. So Khan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. भाई उड़ रही है भाई, ये तो This time and place, the easiest person to find is. न्यू एरिया। ओके भाई। His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. भाई 2 पेट है न्यू, एक बैट वाला भी एक। I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. तो भाई कुछ क्रेजी हो रहा है। As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free. मांगो केंकी क्या? Take me up. भाई कैपिटिनो है तो कुछ क्रेजी ही हो रहा है। Time to say hello. Knock him down. It's either your Oi. or mine. भाई कुछ क्रेजी चीजें है भाई। Truly arrives. We must fight harder than ever. लेट्स गो भाई, चिटलाली मोर चिटलाली गेम प्ले। और फर्स्ट कोड आ गया लॉन्डो। इसकी मुझे फोटो ले लीजिए। वैसे मैं तो लेट हूँ ये सवाल पूछने के लिए, बट स्ट्रीम पे आवाज आ रही थी ना स्क्रीन की। चैट में डालो रिव्यू भाई। फास्ट हो भाई। मैं अबीर भाई जल्दी मेरे को 2 चीज़ें बताओ। आवाज़ आ रही है स्ट्रीम की, और दूसरी मेरी आवाज़ ठीक है स्ट्रीम से ज़्यादा है या कम? और तीसरी बात भूल गया मैं। तीसरी बात याद आएगा तो बताता हूँ। हाँ आ रही है। ओके। और स्ट्रीम अटकी तो नहीं ना? स्ट्रीम अटकी तो नहीं ना? special program.
I'm Gabe from the Loke team. And I'm फिर से Kai. We meet एनपीसी लोग again. बात कर रहे हैं. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all cuckosaurs as friendly as this one? Adult cuckosaurs are Cuckosaurus, usually right. very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckosaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. Cuckosaurs live among the Flower Feather Clan, which is suspended high above the mountains. This is a tribe of warriors, and most of their people can command the power of the skies. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natland. As elite special forces, their job was to detect threats, disseminate intel, भाई and quickly ऐसी जगहों पे neutralize इनका any क्लैन dangers to the है nation. क्रेजी भाई. Though the circumstances are different now, the Tribe, tribe मतलब. never forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials क्या है? test a pilot's skill and teamwork with the cuckosaurs. Oh, I'm so pumped about these cuckosaurs. Yeah, cuckosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that they're the kings of the sky. Cuckosaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal भाई फाइनली roll. वॉन्डरर In को addition, चैलेंज they can मिल even गया use भाई. phlogiston wind tunnels to quickly बहुत cover great वॉन्डर distances. उड़ रहे थे. Okay, so I'm assuming that cuckosaurs are really hard to tame. पूरा चूस Yeah, लूंगा. that's क्रेजी true. भाई. You need to prove yourself in some worthwhile I can't feat, wait to like read that check demonstrating भाई. exceptional Double archery meaning skill भाई, during crazy. flight. That's the only way to become a true cuckosaur rider. Wow, that's so strict. Yeah, tell me about it. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather Clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their cuckosaurs. What is that item? फेदर भाई फेदर होगा और क्या. A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Cuckosaurs live far from the tribe and from each other. So in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce भाई, loud noises. So there's your अच्छे हैं overview ट्रिवियाज of बट हम cuckosaurs. ये क्यों देख Maybe हमें they ये क्यों sound a बता little रहे हैं हमें. unapproachable compared to other saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the Flower Feather Clan's expert peacemaker, can help mediate the conflict. तो मतलब न्यू एरिया में जाके That आवाजें for करेंगे method और of कोकोसॉरस mediation आएगा और is silencing both parties. Is that true? मे बी हमें गैजेट मिल गया. Well, that's only in special cases. Most of the time, Chaska barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and saurians. She keeps the peace between people too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. वही इसको Yeah, गुस्सा बहुत but आता है. luckily for her, मे बी the इसकी स्टोरी Cuckosaurs क्वेस्ट में took her हमें in पता and चले. raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Chaska gained a lot of unique combat experience from her saurian childhood. When Chaska is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's blessing state, Chaska can ride and control her gun like a cuckosaur. The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. भाई It इसका seems एनर्जी so कम liberating. अभी हो रहा Yeah, है. and Chaska's fierce Starting में when नहीं हो she's रहा in था. the zone. In the Night Soul's blessing state, Chaska's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state will cause Chaska to enter a special aiming mode.
This allows her to lock onto a set number of enemies भाई within चांस का range लेना पड़ेगा and fire up to और 6 Shadow Hunt shells, which deal animo damage upon impact. In addition, for every Pyro, 5 Hydro, star भाई Cryo, चांस or का तो Electro 5 character star है in your party, one of Chaska's Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion to deal the corresponding type उसके of बुलेट्स elemental टीम damage. के ऊपर Whoa, no डिपेंड करती way! हैं So भाई Chaska क्रेजी can है ये directly deal other types of elemental damage based on मतलब the फ्री characters in भाई her party. एनिमो And बट since she's नॉट an animal एनिमो character, she भाई can swirl them at the same time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soulseeker shell during her burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soulseeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so I can't cool. pull same No भाई wonder मैं she's भी one of the नहीं पुल कर रहा strongest हूँ warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the औरन challengers औरन who आ रहा है fail वो to 4 earn the स्टार होगा recognition of a Kukusaur. Exactly. But the Barely name मिल doesn't जाए 10 indicate पुल that मारना those ट्राई people करना are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal रस्सी Chronicles खींच रही है 12. गोली Someone will dare to ask, what चलाने if के you didn't need a Kukusaur to fly? लिए हाँ If ना you could फुल change the राइडिंग rules, एनिमेशन है then भाई maybe there wouldn't be गन any राइड wingless to करती है begin और with. कोड़े Now, मारते हैं ना whether घोड़े that's को the वैसे right मार के path गोली चला is for us to discover. भाई मैं तो तुम्हें Chaska will पिटे बना also be there to दूंगा help us find the हाँ answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. ट्राइबल क्रॉनिकल there में मे भी anything उसको else गुस्सा that you गुस्सा can टाइप tell का हमको us? देखने को मिले कुछ क्रेजी Ah, अबिसल पावर remember यूज how I करे mentioned that Chaska was raised by Kukusaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. Even though she's joined human society, Chaska इसकी माँ still है goes to visit her Saurian mother on occasion, especially when she needs some help with a tough भाई situation. टार्जन वाली So स्टोरी Cheska भाई still has a soft side, even though she's a fearsome warrior. प्लस ये एल्फ है भाई The Flower Feather clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the flame. The tribe is facing a crisis, and they'll need the traveler's help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in version 5.1. It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also damages the mind. Many members of the Flower Feather clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Iansan will be there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland really value unity, don't they? No one fights alone. Right. That's one of my favorite things about Natland. Oh, wait. ओ It कैपिटल looks like the captain will also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natland needs mental fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the Masters of the Nightwind, where the Ictomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Nightwind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's Wath Ictomosaur Elder or one of the many shamans who can ये communicate with नेक्स्ट spirits. पेट अपना I पता even नहीं क्या heard that करता the है witch doctors who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you figure it out, travelers? It's kind of Yeah, tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Ictomosaurs are known for their wisdom.
They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal mains. Whoa. भाई Okay. crazy Right. है. Ectomisaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects to enhance their abilities. Doing so allows them to jump higher, move faster, or even obtain surprising rewards. Fight नहीं Ectomisaurs करते can क्या? also extract information from graffiti art to create special objects. Oh, Bro, I bet this that'll quest- come in handy for solving puzzles. I don't Definitely, think so, especially भाई. in Tribal Chronicles Mictlan, which will After become Natlan available in quest ही version होगा. 5.2. The first two acts आता नहीं feature a था lot जल्दी. of intriguing puzzles, so be sure to check them out, travelers. Some of them will require the help of an Ectomisaur, and others can be solved on your own. I noticed that ectomisaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Post Yes, introduction Auroron भाई. can do it too. Like the Ectomisaurs, Auroron has the ability to rise into the air. He also has a keen sense of perception. While charging an aimed shot, Auroron will enter the Spirit Speaker state, allowing him to extract power from Natlan's graffiti and runes. Speaking of Auroron, I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Is he really that भाई sweet, अगर इसको though? थोड़ा सा Just और think about all the पर्सनालिटी sneaking देते around ना and his तो ये grand 5 staff. स्टार हो जाता. डिजाइन देखो True. कितना The मस्त है यार. tribespeople of the Masters of the Nightwind are known for being eccentric. But Auroron really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Auroron Why is a bit Wanderer is different from crying the in the Natlan corner. characters we've met so far. He doesn't need to depend on the Night Soul's Blessing state to gain Night Soul points, and he can maintain the Night Soul's Blessing state even while he's off-field. Ah, that does sound different from the other Natlan characters. So, अब how से do his मेरा abilities फेवरेट work? एनिमल है. Let me start by explaining how सेम Auroron सेम भाई gains मैं Night यही Soul सोच रहा points. हूँ. मस्त है ये This can 4 happen in स्टार. multiple ways. मैं For कैचीना example, इतना यूज करने Auroron लग गया can हूँ gain तो Night Soul ये तो points when बहुत one of his मस्त party दिखता भी members है. triggers a Night Soul मे भी burst. He can also gain them लोग when other ज्यादा party यूज members करेंगे. deal Hydro or Electro attacks to enemies after Gameplay Auroron देखना unleashes पड़ेगा. his elemental skill. Oh, then it sounds like he और works well with एनिमल नहीं है. Hydro and अरे Electro characters. एनिमल से कम भी नहीं है Yup. यार. And in combat, when enemies take damage from electro-charged reactions or other party members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's Blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night मतलब Soul सुपर points, enter the Night इलेक्ट्रो Soul's Blessing चार्ज state, and टाइप का trigger the कुछ effect. बफ कर Exactly. गए. Though I should mention I mean, that इसके पहले Auroron वाला doesn't जो need to be on the वो field जिसको to trigger the बड़े Hypersense काम थे. effect. Wait, he can trigger it even while he's off field? That sounds really useful. Totally. His elemental burst provides a convenient way to deal damage and support your party. Auroron performs Range an है यार, ancient इतना ritual छोटा with range his क्यों है इसका? burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up close, the Oculus releases a sound wave to deal damage. That should be great for crowd control. Yes, with Auroron in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Auroron can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Awesome. Auroron really cherishes his friends with a little भाई teamwork 4 on स्टार his डिफ side. कर रहा है I'm ये. sure victory will always be within reach. इलेक्ट्रो चार्ज तो बहुत Cool. इजी होती है टीम्स So तो we मे बी introduced अर्ली two of गेम the लोगों को upcoming काम regions आए. in this update. देखते The हैं, Flower try Feather करेंगे. Clan and the Masters of the Nightwind. New But area there's showcase, more. new preview, Version new chest, 5.2 भाई. actually introduces another new region. It's called Ochkanatlan. Oh, I think we caught a glimpse of this ancient city when we were looking at कौन the सा Flower नेटलैंड? Feather Clan. ओच का. It's really ओच beautiful का from far नेटलैंड भाई away, अजीब नाम है. but those clouds look kind of और ominous. को 10 It पुल looks तो दे completely ही सकते हैं. abandoned. और क्या Is भाई, it 10 पुल dangerous? तो हम सब Yes. देंगे. This is a restricted नहीं area दे in सकता, Natlan अरे. due to its severe abyssal contamination, and it seems uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in search of treasure or भाई, to slay the sword dragon. भाई. Unfortunately, none of them have ever returned.
The Flower Feather 40 clan बोल often दूंगा. sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. Wait, did you say slay the dragon? Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature Oh. is actually really terrifying. Oh. It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects भाई an dragon, intruder, actual then it dragon will भाई. attack without hesitation. Okay, that's pretty concerning. It's भाई easy to देखो take देखो human ये जो saurian ड्रैगन है ना ये coexistence for एज granted these इसका days, कुछ मेन but पॉइंट नहीं होगा actually गेम took में generations बट of ये effort to फ्यूचर reach this टेस्टिंग point. है. This relationship wasn't ये future nearly so testing कर रही है harmonious in the game ना. ancient past. Travelers will need to explore Ochkanatland Dragon to spine uncover के the लिए. reason behind this dragon's rampage. Of course, travelers won't have to do this alone. Here, take a look. Oh, what's that? Yeah. This is a very important companion who will help us explore Ochkanatland. His name is Kokoi. As for his Kokoi. power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then. पाइमॉन्स cheer us लड़ेगा up. भाई ये बहुत मजा आएगा. Hey, let's not put our Tapetlasaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokoi comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokoik has enough power, you can take him to track down the evil dragon. What a useful little guy. I भाई know, right? Now, travelers can explore Ochkanatland with two companions, Kokoik and Little One. In fact, हाँ, I've पाइमॉन heard को there's भूल even गया a ये special बंदा भाई. token around एनपीसी here ने that बोला can enable पाइमॉन को Little One कौन to traverse जानता a है. volcano. Hmm. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatland. For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With मस्त the लग help of रहा a है भाई. Kukusaur, बहुत we प्रीमो लग might रहा है even मुझे be लग able रहा है to न्यू chase एरिया down में. the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can fish in Netland? Yes, but I've got some ले friendly तो advice, travelers. यही You बच should गया be था भाई. very careful while exploring Ochkanatland. Some of the abyssal monsters here can distort their appearance to mimic powerful enemies. High-level monsters such as the tenebrous Papilla By can Aeon mimic Drake. even stronger enemies. Huh? It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside Aye. of them and mimic creatures from Tevat. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Doing so allows them to take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul aligned elemental attacks are especially effective against these wards. Wow, the abyss has gotten so advanced. न्यू बॉस It's भाई scary to think ये about साला how much harder सारे these के fights सारे will बॉसों get के if these स्पेशल abyssal मूव monsters पे लेगा ना continue मुंह to पे. evolve. Yeah. Okay, that was a lot सारे of क्रेजी information मूव to take in मारेगा at once. ऐसे. चेन But शुरू कर before we देगा take कॉम्बो. our first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, जैसे limited time exploration rewards हाँ will ये be तो available फर्स्ट in डे version क्लेम हो रहा है. 5.2. Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra Primo Gems, and the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event 10 का wishes. बढ़िया है. In the हाँ first मन भी half of करेगा लेने version का. 5.2, लिनी travelers can look forward to event wishes from लिनी आ Chaska रहा है and यार. Lenny. Auroron will also receive a भाई drop डबल rate बो boost. बैनर. And in the second half of version 5.2, Zhongli we'll have returning event wishes for Zhongli and New Villette. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Astro Vulture's Crimson Plumage, भाई and ये 2 तो new नहीं Natland चाहिए था. specific 4-star हाँ. weapons. Be sure to check them out if you're interested. All right, it's time for our first break. Once we come back, we'll dive right into फाइनली the event फिशिंग इन portion. नेटलैंड में भी नया फिशिंग बेस वेपन भी आ जाए. हाँ हो सकता है. अरे वो मोविका के लिए समझ रहे हो. फुरीना के लिए जैसे वेपन है ना फिशिंग के लिए में भी मोविका के लिए F2P वेपन हो. क्योंकि नहीडा के लिए तो ऑलरेडी था ना सैक्रिफिशियल नहीडा के लिए ऑलरेडी था इसलिए नेटलैंड सोमेरो भी नहीं था. पर क्लेमोर तो हम पे कोई अच्छा है नहीं तो मोविका के साथ शायद आ जाए एक वेपन. कोड लिख दूं क्या मैं लिख देता.
क्या हो रहा है स्क्रीन पे? Welcome back, travelers. Welcome back. Calamity Let's of dive issues straight for into the भाई event नया weapon आ section. गया. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's Event right. weapon, In the event. version 5.2 event, Ikitomi Spirit Seeking Scrolls, travelers will team up with Citlali and Auroran to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including Primo Jams. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some Including kind of Primo ritual. Gems नहीं, It's सिर्फ Primo also Gems ही mysterious. चाहिए. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Citlali and Auroran have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Citlali first star नहीं Travelers will यार. have to work together to herd the scattered row अरे of ये spirits event हमने into पहले भी specific किया है. zones to earn points. Pay attention to the conditions on the field if you want a higher क्योंकि तुम्हें score. याद है. For example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of the storms. In Evil Banisher, travelers will need to select I the wish right Citlali teams to first star complete भाई. the I wish to objectives. ban Completing someone all भाई. of the objectives will award you the Banishing Aura, अब which देखो allows भाई you to किसकी deal wish पहले AoE complete damage होती by है. spraying paint at enemies. That paint really matches the Masters of the Nightwind's aesthetic. It's super cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Citlali will use her powers to reveal special fragments. Travelers will need to piece these देखते हैं भाई fragments together Citlali का and कैसा assemble them gameplay on a है. woven scroll. अगर Make आज sure story that you बताएंगे pay बट. attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should mention. Travelers can obtain a new 4-star sword Weapon by दिखाओ completing दिखाओ. this event. Substat The जल्दी. design Click कर definitely उस fits the पे. Masters of the Nightwind. It looks like Click some कर. kind of ceremonial artifact. I totally agree. नहीं किया. Oh, and this event will allow travelers to learn more about Natland's secrets. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious Citlali का and gameplay तो अभी legendary दिखाना place, the दिखाने Mare वाले Javar. नहीं है अभी. हाँ अभी नहीं We've been दिखाएंगे. hearing about Next this one, place next one. since Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Metamorphosis Active क्या होता adventurers है? have been invited to take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. I know you're up to the challenge, Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the भाई, Knights of क्यों Favonius मेहनत are करवा रहे conducting हैं a यार war हमसे? game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the Honorary Knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and stratagems are completely random. You know, just to build some Pokemon battle unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units ओए increases ओए ये as क्या the कर रहा wargame था? progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so do your best to win as many rounds as possible, earn wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the Nice excitement pattern. rolling हाँ in this भाई, next कुछ event. तो अजीब We है भाई. actually have a Crazy demo, crazy so चीजें कर रहे please हैं. take a look. क्या है? Oh, looks TCG like में they're क्या आ selecting गए? tactics. Double damage? That sounds powerful. Whoa, it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful तो elemental चार reactions. कार्ड क्यों हैं? The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid TCG में back. प्रीमो कर दो. Characters TCG में will लेवल 10 automatically तक duel प्रीमो each तो other, है and ना skill यार. animations are now shorter in length. Wow, it's Level like we 10 got के a बाद whole primo new नहीं है. Genius Invocation TCG after coming But back from achievements Natland. भी हैं कुछ. Talk about whiplash.
That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to Join आ गई regular भाई। Genius Invocation TCG. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be Convoy. able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals Okay. are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. I feel like Auroran would really shine in this event. He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the Leyline Overflow event will लो return भाई in version गरीबों का 5.2. इवेंट आ गया If भाई you ये need तो Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. First up is the change to the Imaginarium ओए Theater. क्या चेंज हुआ Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a मेरा challenge event and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click Next Act if you want to keep fighting. Nice. हाँ, वो Travelers can अच्छा now है, enjoy the वो बार thrill बार of टेबल combat पे फेंक without देते any थे ना। interruptions. And for Acha, all the acha. generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. देखते हैं कैसे You C2 can now का check हुआ which friends have C2 borrowed your फुरीना supports फ्लेक्स by कर looking दिया at हम the लोगों पे supporting cast screen. Cool. शर्म नहीं आया It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've just started experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. पता नहीं Now we can directly see which Use elements करूँगा work अभी। best against specific enemies. That's definitely going to save some time. For हो sure, गया मैं भी खत्म। and we can expect even more नहीं, एक कोड और optimizations in बचा the है यार। future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce the other system optimizations coming in version 5.2. You can outsort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. That's really मैं nice. तो वैसे ही The escape दबा dev के team cancel designed a करता lot रहता of हूँ। intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The खाने seed का भी हो गया। dispensary can now hold more of every type of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. In addition, the cooldown for the boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot. हाँ but इसका I'm cooldown always 20 short सेकंड on तक wood. था भाई So 20 this should be 25 really वही helpful. बकवास था ये Nice! थोड़ा I'm so excited for you! Oh, and सही है। optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure lock settings with a single click. ये सब कोई यूज भी Just करता है hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. भाई ये सब ना Of गरीबों का course, if फिल्टर you है have your own जो लोग ideas in mind, then you can always disable the जो recommended plans to configure 2000 custom रेजिन ones 5000 instead. रेजिन The उड़ाते हैं update ना also allows you उन to लोगों के batch लिए lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to organize your inventory. In addition, a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock button on each artifact. Travelers can use this feature to mark क्या their गंदा favorite piece artifacts star and और filter lock by करे है stars भाई। to quickly track them down. Finally,
Treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. भाई A ये quick अच्छा swap feature सही will है। also be added for treasure compasses and Oculus Resonance stones. Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Awesome. Be sure to check out future announcements for more details on the version 5.2 optimizations. All right, that was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for the third redemption code. और रिडेम्पशन कोड तो इसके बाद क्या बच क्या गया? बचा है करने को। अच्छा है भाई वो वैसे कंपास तो नेटलैंड अच्छा है तो हम लोगों पे कंपास है। नेक्स्ट रीजन तो 2 सेकंड में एक्सप्लोर होगी, सब कुछ ही मार्क हो जाएगा ना। भाई नए एरिया में जाके अपन एक बार कंपास का बटन दबाएंगे और सिली ट्रायल सब कुछ ही मार्क हो जाएगा भाई 2 सेकंड। भाई इसमें 50,000 मोरा भी मिलता है पता है? अभी देख रहा है 50,000 मोरा के लिए तो क्लेम कर रहे हैं ना, सच बोल दे। हम लोग यहाँ पे 100 प्रीमो देख रहे हैं तो वो 50,000 प्रीमो देख रहा है। Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda? भाई Gabe? आज We have some very exciting news to share. After the version update on November 20th, नहीं travelers will be able to play Save कर लो Genshin ना। Impact on the Xbox Series X Xbox and क्या S. रहा है? Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. बस That खत्म। means that we've reached the end of the special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Chaska and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Auroran seems like a very layered character. The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natland storyline, and we have so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am. So भाई Genshin का it's just NPC भी exciting to Genshin see खेलता another है ना, platform become crazy। available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. खत्म फिर। बाय बाय बोल के मैं भी कट जाऊँ क्या? तुम्हें आवाज देता हूँ मैं। तो फिर भाई कैसा लगा? क्या लग रहा है? भाई मन नहीं है यार मेरे को। टास्क करनी चाहिए मेरे को, बट मेरे को करनी नहीं है। मेरे को चिटलाले और मोविका दोनों करनी है, और चिटलाले के कंपैरिजन में चास्का तो नहीं। अरे मैं भूल ही गया, पता है क्या बताऊं? कि जिस दिन चास्का का बैनर रिलीज होगा ना, उस दिन शाम को या रात तक वो हो जाएगा अपने चिटलाले और मोविका का गेम प्ले भी तो रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हो? लीक्स भी तो वैसे ही चलते हैं। अच्छा मैंने रिडीम नहीं किया कोड, 2 सेकंड देना होगा। कोड्स लिखे तो होंगे ना, लिखे फर्स्ट वाला डन प्लस ये मेरे को उस पे भी डालना है। अरे यार इसमें है ना।
पूरा वे चला क्या? क्या हुआ भाई? शिफ्ट एंटर नहीं चलता है इसमें। कोड और इसको ओपन कर देना। जस्ट इन केस। अरे मैं तो भूल ही गया, ये पिन पुल नहीं करने वाला था मैं, मेरे को रिडीम करके पुल करने है भाई। कैसा ना मेरी आईडी से भी क्लेम भाई, क्लियर भाई, करते हैं करते हैं। ये वाला कर लिया हम लोग को, फिर ये वाला क्या डन। बॉयज तो फिर क्या लग रहा है, आएगा क्या अपने को होमा? आज तो लग रहा है हो सकता है आ जाए। हम 60 पुल और कर सकते हैं जमा शायद। गोल्डन वाइन, गोल्डन। स्क्रीन तो हटाओ, स्क्रीन तो हटाओ, मतलब लॉल हो गया क्या मेरा फिर से? एनएच नहीं, डिसेबल क्यों नहीं किया मैंने अभी तक उसको? भाई ठीक है कोई नहीं। अच्छा है वैसे, तुम लोगों को अगर नहीं भी दिखता तो नुकसान नहीं था। कुछ आया ही नहीं। मैंने रीजन क्लेम कर, रीजन नहीं, कमीशन कर दी, कमीशन भी कर दी, मतलब नो होप्स भाई। मतलब अब नेक्स्ट बैनर के लिए सेव करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता। कंडेंस भी बना लिया मैंने, तो फिर मजदूरी करूँ भाई जाके। नया एरिया मस्त लग रहा है रे, प्लस हम पे इस बार कंपास भी है, तो फिर बस कितने दिन बचे हैं, जैसे ही आएगा वैसे ही सब खत्म कर दूंगा। एक हीलर चाहिए था मेरे को, कोको का। We'll need a strategy. और नो Sounds good to me. 10 दिन है यार अभी तक, 10 दिन तो है। Hold the line. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Emerge right now. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. क्या हुआ I स्लेयर see भाई? everything. Billowing surge. Nothing lasts forever. भाई ईएम का सैंड्स तो मत दो कम से कम। डिफेंस जब चाहिए होता है तब डिफेंस भी नहीं आ रहा है। Right here. Clouds high, the birds call. One with nature. पता है क्या हुआ आज? Rest and rebuild. Sharing my knowledge. Right now. Right here. Hey, I'm always watching. वो कोक मंगाई थी ब्लिंकिट से, और ब्लिंकिट वाला कोक पी गया। तो तूने पैसे दे दिए थे? ये क्या बकवास है? जो क्यों नहीं भाई? Right now. मेरा Right here. Right मेरे now. इसको मुंह में क्या लिखा है इसने? The wind knows me. Yeah. मेरा इसको मुनी लेके everyone hold hands. वैसे मेरे को पता है ना ये कौन है, अर्जुन। Allow me.
हरकतें As क्यों one दे रहा with है तो? wind and cloud. Ch- 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 Ha! Right here, right now, right here. पैसे तो ऑनलाइन दिए थे, अब कंप्लेंट डाली है भाई। डाल भाई, ऐसे Ha! ऐसे कैसे A पी sight गया? to behold. Emerge, right now, emerge. Fallen मैं फुल leaves adorn my night. नशे में था One वो with nature. भाई, नशे में, Hold the line. ड्यूटी के टाइम नशे में। Make yourselves at home. Torrents, bring refuge. Ch- ch- Right now, right here, right now. Nothing lasts forever. भाई मेरा अकाउंट रिव्यू कर दो। उसमें रिव्यू क्या करना? कल खोल के खेली थी, रिव्यू क्या करना मतलब? ओह, गंदा पीस, गलत सेट। मैं तो कह रहा हूँ बैन कर दो इसको, है ना? यही सोच रहा हूँ मैं। Right here, right now, कर दो, right कर here. दो। Into the अरे wind. Ha! कर सकते हैं, दोस्त है मेरा। Rebuild. सोच रहा है हरकतें दूंगा स्ट्रीम पे आके। I'm seeing stars. That really hurt. Emerge, right here, emerge. The wind knows me. I'm always watching. Cha! किसको बैन करना है भाई? ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। भाई नहीं मिल रहा है यार कुछ। पे 22 पुल वाली बात क्या कर रहे थे? करने है क्या? करना है क्या 22 पुल तुम्हारे? कर दो रिव्यू। रिव्यू नहीं है, रिव्यू में कुछ नहीं रखा है। कल खेली थी, क्या रिव्यू करना? और ये पीस तो कर देते हैं रिव्यू, क्या जाते हैं। आज तुमने गेम खोली तो थी भाई। होटाओ का तो मैंने आज किया ना, सब लेवल अप, इस लेवल। होटाओ हाँ, एचपी कम है। ड्रैगन विन चल रही है 20,000 पे। ईएम सैंड्स लेके घूम रहे हो। क्रिम्सन है वो ठीक है। C0 है अभी 8870 का है। वही रेट भी बढ़ाओ, रेट ही नहीं है, ईएम भर दिया है। एचपी भी 10,000 कम है। 10,000 की 28,000 तो होती है, 28,000। अच्छी नहीं है, सच बता रहा हूँ। येलन तो वैसे ही है, और 8 पे छोड़ा था, 8 पे ही है। 400 ये ER नहीं है काजू पे। फेवो नहीं चल रही है, इसके लिए कैच भी करना है तुम्हें। मेरे को सैंड चाहिए। चाहिए तो क्या करना चाहिए भाई फिर? अब मेरे ख्याल से आज ज़्यादा प्लान नहीं था हमारा यार, सच बताऊँ, खेलने का भी नहीं था। और क्या करना है बताओ? कुछ तुम्हारे अकाउंट में करना है क्या? चैलेंज कंप्लीट कौन सा? अच्छा वो तो मैंने किया है चैलेंज कंप्लीट तुम्हारा। हाँ हाँ, डोमेन। डोमेन क्या तुम्हारा डोमेन? मैं इसका मतलब जा रहा हूँ क्या? ओके ठीक है, ये सब अपन कभी ट्राई देंगे। इनको पेलने में मजा आएगा, ये कर देते हैं। Right here, right now. Into the wind. Cha! Committed to memory. 24,000
कई मारते यार ये भी। फोटो का टैलेंट लेवल अप का तुमने ही तो अभी बोला। हाँ बट उसकी अभी आर्टिफैक्ट वगैरह अच्छी नहीं है। ये में कहाँ गिर गया? Right here. Emerge. 24,000 तो ये ऐसे ही नॉर्मल है, 19 मारती है और 24 इलेक्ट्रो स्वर्ग है और नॉन क्रिट भी मारती है। आर्टिफैक्ट कर दो नहीं। पता है आज जब मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला था ना, उससे पहले बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि पहले मेरा लेआउट ख़राब हो गया था, फिर फ़ोटो ऊपर नीचे हो रही थी, उसके बाद चैट नहीं आ रही थी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या सीन हो रहा था। Traveling to other worlds is all that anyone फिर seems फिर to be गेम नहीं आ writing रही about थी, these फिर days. विंडो नहीं आ रही थी, और उसके बाद पता नहीं आ रही थी तो कुछ और गायब हो रहा था। अरे मर जाएगी। अच्छा तो साले बोला क्योंकि कुछ करना है, मतलब तुमने कहा था पुल करना, तो मैं पूछ रहा था क्या पता तुम्हें वेब में पुल करवाना। हाँ इसलिए वो ऐसे ही बोल दिया था यार मैंने, अगर करवाना हो मतलब मेरे से मेरे अकाउंट में करवाओ ना यार। पेटी देख लेते हैं, हमने अभी 2 पुल मारे ना। 5 10 15 20 35 40 45 51 टू 52 की पेटी यार आ सकता है वेपन। 10 दिन है। 10 दिन है, 22 दिन में रीसेट है। जास्का का वेपन नहीं, ये कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं 50 जीत गया नेक्स्ट तो मैं चास्का का वेपन कर सकता हूँ, है ना। लास्ट टाइम मैंने क्या पुल किया था, मैंने कितनी भी नहीं मिली। 25 30 35 40 45 49 की पिटी है भाई। सोचो ये मैंने यहाँ पे नहीं किए होते तो मैं आज वेपन निकाल लेता। इसका मतलब देख रहे हो, मैंने ट्राई क्यों किया, मैंने शिलरिन की ट्राई दी ना, उसी से वेपन रह गया मेरा। बट ठीक है ना, अगर नेक्स्ट मैं चास का करूँगा, सोचूंगा मैं चास का करने का सोचूंगा। नहीं चिटलाली करनी है, मूवी का भी करनी है, क्या हो रहा है। नहीं करनी, सेव है, नेक्स्ट पूरा पैस सेव है, ठीक है सिंपल। भाई पुल तो 5.2 में 45 की पेटी, तो चास का ले लेना। नहीं अगर मैंने चास का ले ली तो सोच रहा है फिर मैं मूवी का मेरे को स्किप करनी पड़ेगी, फिर चिटलाली आई है फालतू का। उससे अच्छा वेट कर लेते हैं ना, गेम प्ले आने देते हैं फिर सोचेंगे। नोवलेट ने नोवलेट तो हार्ड स्किप है मेरे लिए। The wind knows me. चलता मैं यार, आज बस यही गेम प्ले देखने आते हैं हम, गेम प्ले और रीरन्स। भाई मेरे को, मैं एडिट कर रहा हूँ, पता है चैट आ गया और बदल जाएगी धीरे धीरे, पूरा स्ट्रीम बदलेगा धीरे धीरे। अब कुछ रिवील तो नहीं करना है। नोवलेट भाई बढ़िया है, तुम्हारा कलेक्शन में कैरेक्टर भी मेरे को कलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा नोवलेट मेरे को पसंद नहीं है, और क्या फ़ायदा नहीं है मेरे को, मुझे मन भी नहीं है, पसंद भी नहीं है, कुछ खराब भी है उसमें, बट मन चाहिए नहीं। अबीर भाई तुम चास का लेनी है नहीं लेनी वो सोचो यार, सोचो भाई तुमको चाहिए कि नहीं, लसोटाओ का वेपन कर रहे हो कि नहीं। I carry memories of my home. This blade. It is the last. मैं तो नहीं लेने वाला। सिंपल है भाई तुम्हारा, मेरा भी सिंपल है, मेरे को भी नहीं है। To the land of. बैटल पास
ये सब क्लेम करके कुछ काश मिलता एक्स्ट्रा मोरा वगैरह। अभी गेम प्ले तो देखो। Time to ओए go. मेटन, मेटन क्या कर रही है? Sharing my knowledge. सेकेंड अकाउंट में Right कुकी here. भी नहीं Right मिले। now. अरे Right यार, here. Wind कोई strike. नहीं। इसको 2000 कम डैमेज होता है, 22,000 की पड़ी और 19 मतलब नईडा का मतलब 16 हट गया था 19 मतलब। उठाओ का वेपन नहीं चाहिए, ड्रैगन्स बेन ही चलेगा मेरी तो रीजन। भाई मेरे तुम्हें कम से कम कुकी नहीं मिली, मेरे को तो कुछ भी नहीं आया भाई, दो दो नीले देखने पड़े। बट अब मेरी 51 की पिटी है और 10 दिन है तो अपने को अगले 5-10 पुल में ना आ ही जाए कुछ। अगले 5 पुल का अपन ट्राई, बट वेपन चाहिए क्यों? अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर हमें वेपन नहीं मिला तो हम नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर लेंगे हम उसके लिए सेव कर सकते हैं ना। अगर वो मिल गया तो फिर वेपन की भी ट्राई दे देंगे ना, वैसे बेटर है। Personally, I think the पता नहीं idea जो of होता है things हम staying दो। the same forever is quite beautiful. बाकी मैं चलता हूँ गाइस, ठीक है। But आज alas, अपन that सिर्फ is उसी के लिए simply आए थे, not the way the world works. स्पेशल प्रोग्राम के लिए। ओके फिर मैं भी वेपन खोल सकता हूँ अभी। करो ट्राई देना, मिला तो बढ़िया, लेकिन नहीं लूँगा। मर्जी भाई तुम्हारी, ले लो वेपन तुम, मैं चलाऊंगा किस पे? वो वेपन ले लिया तो है नहीं ना मेरे पे। नईडा वाला मिल गया तो बढ़िया है, कुछ और मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। होटाओ का वेपन मिल गया तो फ्यूचर प्रूफ हो जाऊंगा फ्यूचर में किसी को। पर मैं भी ले लेता हूँ, साइनो लूंगा फ्यूचर में, Traveling to उसको other दूंगा। worlds is all that anyone seems to be writing about these दोनों days. बढ़िया वेपन, हाँ बहुत बढ़िया वेपन। और Goodness knows what they find so disappointing about their own world. ठीक है भाई, अभी भाई तुम पे कुछ है नहीं करने को, देख रहा हूँ टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम मेरा। ओके बाय। शिव, ऐसा कुछ भी मत लिखो अब तुम, मैं जाता। नहीं